20.4. The Supreme Court, we have mentioned in the beginning of the lesson, the Supreme Court represents the Union judiciary, but the structure and functioning of judicial branch is different. Okay. From those of the executive and legislative branches, do you have some idea or experience of judicial actions? You may have heard at some point of time that the case that began in the lower court was considered by the courts at a district level, then the High Court, and ultimately by the Supreme Court. This happens because India has an unified judiciary. It means that there is a hierarchy of courts at the highest level, of which a Supreme Court, then at the state level there is a High Court, and at district level there is a lower court. Still lower levels there are subordinate courts. ठीक है, बहुत बार हमने सुना होता है कि केस एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाता है, ठीक है, उसके अपर लेवल पे जाता है, नीचे नहीं आता है बट ऊपर ही जाता है जनरली। उसमें ऐसा होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर नहीं हो रहा है सेट, तो वो क्या होगा, स्टेट लेवल पे जाएगा और स्टेट से फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है समटाइम्स, बिकॉज कुछ अथॉरिटीज उन्हीं के पास होती है कि उनको वो असाइन करे, ठीक है। एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस हु नंबर इज prescribed by the parliament from the time to time. In 1950 there was a chief justice, ठीक है, 1950 में chief justice थे and there were 7 judges, उस वक्त 7 judges थे, but the number of judges continued increasing as per the need. उसके need के हिसाब से number of judges भी increase होते रहते हैं। The Supreme Court at present consists of Chief Justice and 30 judges. Supreme Court अभी के टाइम में Chief Justice और 30 judges included है। The Chief Justice and other judges of Supreme Court are appointed by the President of India. ठीक है, कौन इसे अपॉइंट करता है? President of India. For appointing the Chief Justice of India, the other judges of Supreme Court or a High Courts may be consulted. Usually, the senior most judge in the Supreme Court is appointed as a Chief Justice. For appointment other judges of the Supreme Court, the Chief Justice has to be consulted. Usually, the Chief Justice himself consults a collegium of the 4 senior most judges, and all of them need to agree for any candidate to be recommended for the appointment of judge. A person can be appointed as a judge of the Supreme Court only if he and she is a citizen of India. ठीक है, अगर कोई भी person को appoint किया जाता है as a judge of Supreme Court, he must be the citizen of India, must have at least a judge of a High Court or of 2 or more such courts in a succession of at least 5 years तक, ठीक है, होने चाहिए वो लोग। Must have been an advocate of a High Court or of 2 High Court के जज होने चाहिए, और of 2 or more such courts succession for at least 10 years. In the opinion of the President, a distinguished justice. ये सारी क्वालिफिकेशंस उनको जरूरत पड़ती है, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो जज के लिए क्वालिफाइड होते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स की एज तक वो लोग ऑफिस को अटेन कर सकते हैं, ठीक है, उनकी जगह पे कंटिन्यू रह सकते हैं, बट दे मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट की अगर ऑर्डर करे प्रेसिडेंट, तो उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। पास्ड आफ्टर एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। कौन सपोर्ट करेगा? स्पेशल मेजॉरिटी of each house of parliament on the ground of proved misbehavior or incapacity. जब भी misbehavior देखने मिले या फिर incapacity देखने मिले, this is known as an impeachment procedure on Chief Justice or a judge of Supreme Court has been impeached so far. A judge who has served in a Supreme Court is barred from planting in any court within the territory of India after retirement. The jurisdiction of Supreme Court. The Supreme Court has 3 types of jurisdiction: original, appellate, and advisory. Original jurisdiction क्या होता है? The Supreme Court alone has authority to hire directly certain cases. ठीक है, Supreme Court के पास directly कुछ cases को hire करने का
अथॉरिटी होता है। These are disputes between union government and one more state government. Union government और state government के बीच में अगर कोई disputes मतलब problem create या झगड़ा होता है तो disputes between two or more states, दो states के बीच के disputes को भी solve करने का, disputes between the government of India and one more state on one side and one more state on the other side. ठीक है, इस तरीके से अलग अलग दो states के बीच में अगर disputes होता है तो अभी government of India तब ये लोग क्या करते हैं, इसका केस सॉल्व करते हैं। जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट इनका केस हायर करते हैं। Appellate jurisdiction, the powers of superior or a higher court of higher to hire and decide appeals against the judgment of the lower court is called appellate jurisdiction. The Supreme Court is a court of appeal for constitutional, civil and criminal cases. Supreme Court किस लिए है? Court of appeal for constitutional हो, civil हो या फिर criminal cases हो. It can hire appeals against the judgment of a high court. It also has the power to review its own judgment. It may, in its own discretion, grant special leave to the appeal against the judgment or orders delivered or passed by any court or tribunal within the territory of India. सिर्फ within the territory of India हो तभी इस allow होगा, appeal होगा। Moreover, appeal may come to the Supreme Court in the criminal cases if the High Court certifies that the case is fit for appeal to the Supreme Court. The special appellate power has become a handy weapon in the hands of court to review the decision pertaining to election and labor and industrial tribunals. जब ये इस तरीके की सिचुएशंस हो तब ये केसेस को पास ऑन किया जा सकता है हाई कोर्ट्स में। ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है? The Supreme Court has a special advisory jurisdiction in the matter which may specially be referred to it by the President of India. If at any time it appears to the President that the question of law of facts or fact has arisen or is likely to arise, which is of such public importance that it is urgent to obtain the opinion of Supreme Court on it. उसके लिए जो भी ओपिनियन हो वो सुप्रीम कोर्ट से भी लिया जाता है। He and she may refer it to the Supreme Court. The Supreme Court may, after such hiring as thinks fit, report to the President its opinion thereon. The report or the opinion of the Supreme Court is of course not binding on the President. Similarly, there is no compulsion for the court to give its advice. ठीक है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वो कोर्ट में केसेस पास होते रहते हैं टू द अपर लेवल ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी में एडवाइस दी जाए वही कोर्ट में, जब तक कि उनके लेवल तक हो। ठीक है, तब तक वो गाइड करेंगे। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि इट शुड बी गो ऑन अ हायर लेवल तो उसको फिर पास ऑन किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहा जा सकता है। The records of the Supreme Court in the matters of interpretation of law or of the Constitution have to be accepted when proceeded before the law or lower courts के सामने जब रखा हो। Beside the above mentioned jurisdiction, there are few more special functions of the Supreme Court of India. These are, इसके अलावा Supreme Court of India के कुछ और भी functions हैं, जैसे कि guardian of a constitution, judicial review. Let's see. Guardian of Constitution, as an interpreter of Constitution, the Supreme Court has the power to protect and define the Constitution. Supreme Court के पास ये powers है to protect and defend the Constitution. If the court finds that any law or executive order is against the Constitution, कोई भी अगर law या कोई भी activity law और Constitution के against दिख रही हो तो the same can be declared unconstitutional और invalid. इसको invalid declare किया जा सकता है। Similarly, Supreme Court also acts as a custodian and protector of fundamental rights. Fundamental rights के लिए भी वो लड़ते हैं, उसके लिए भी वो सुनवाई सुनाते हैं। If any citizen feels that his or her fundamental rights have been infringed, he and she may move to the Supreme Court directly for the protection of his or her fundamental rights.
जब भी किसी इंडिविजुअल को ऐसा फील होता है कि उसके जो भी राइट्स है वो उससे छीने जा रहे हैं या उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में खुद के प्रोटेक्शन के लिए अपील कर सकते हैं, वो मूव हो सकते हैं। The rights of constitutional remedies empowers the Supreme Court to act as a guardian of the Constitution. Constitution का guardian की तरह वो रह सकते हैं। फिर है judicial review. The Supreme Court of India has the powers to examine the validity of laws or executive orders. The Supreme Court has the powers to interpret the Constitution, and through this it has assumed the powers of judicial review. ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। The Supreme Court of India has the powers to examine the validity of laws के validity और executive orders. The Supreme Court has the powers to interpret the Constitution. कितने powers भी होते हैं Constitution को interpret कर सकें, and through this it has assumed the powers of judicial review. 20.3.2 Rajya Sabha. Rajya Sabha, the Council of States, is the upper house of the Parliament. The maximum number of the members of the house cannot exceed 250. ठीक है, इसमें 250 की लिमिट है. Out of this, 238 members represented the state and union territories, and 12 are nominated by the President of India. The nominated members are the distinguished person in the field of literacy, art, science, and social service. The elected representatives are elected by the state legislative assemblies according to the system of proportional representation by means of single transferable vote. The number of members for each state depends on the population of state. The Rajya Sabha is not a subject to dissolution. ठीक है. The members of Rajya Sabha are elected for the 6 years. ठीक है, ये generally 6 years के लिए elect किए जाते हैं. But there is an arrangement according to which 1/3 of the member retire every 2 years and new members are elected. The retiring member can be re-elected to be eligible to be a member of Rajya Sabha. ठीक है, उनको re-elect किया जा सकता है, जो भी retire होते हैं every 2 years में उनको re-elect भी किया जा सकता है. The Rajya Sabha, a person must be eligible to be the member of Rajya Sabha. The person must be the citizen of India, must at least 30 years of age. Other qualifications are same as those of member of Lok Sabha. जो लोक सभा के लिए वैसे ही राज्य सभा के लिए भी qualifications जरूरी होती है. This session of Parliament are summoned by the President. There should not be the gap of more than 6 months between 2 sessions. The President has the right to prorogue the session. Lok Sabha can be dissolved by the President but not the Rajya Sabha, as it is a permanent house. Lok Sabha को dissolve किया जा सकता है, तो राज्य सभा को नहीं, because कि वो permanent house है Parliament का. 20.4.2 Judicial Activism. Judicial activism has been defined as an innovative interpretation of the Constitution by the court. Court की तरफ से ये क्या है? Innovative interpretation है. This has often been criticized as judiciary taking over the powers of legislature, but in India it has enjoyed support from the public because it has concentrated on giving the disadvantaged the essence of justice. It uses the instrument of public interest litigation, PIL. With the public interest litigation, any person can bring a petition about a problem before the court, and not just the person affected by the problem. PIL has often been used on behalf of people who are poor or disadvantaged and do not have the means to approach the court. With judicial activism and PIL, court have been judgments on pollution. Court have been judgment on pollution, deed for the uniform civil code, ठीक है, सभी के लिए एक जैसा, activation of unauthorized buildings, ठीक है, unauthorized building का ध्यान में रखते हुए उनको भी dissolve मतलब करना, वो करना, inactive eviction करना, stopping child laboring in a dangerous corruption and other
issues. चाइल्ड लेबरिंग को भी बंद करना, dangerous occupations and other issues. Judicial activism has been defined as an innovative interpretation of the constitution by the court. ठीक है, इसको innovative interpretation की तरह प्रेजेंट किया गया. This has often been criticized as a judiciary taking over the powers of legislator. इसमें क्या हो रहा था, लेजिस्लेटर के जो भी सारे पावर्स थे वो जुडिशरी ले रहा था, मतलब क्रिटिसाइज्ड, ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्ड हुआ. बट इन इंडिया इट हैज एंजॉयड सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, पर पब्लिक फिर भी इसे सपोर्ट करती रही, बिकॉज इट हैज बीन कंसंट्रेटेड ऑन द गिविंग द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस टू द जस्टिस. ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जस्टिस को डिसएडवांटेज हो रहा था इसकी वजह से. It uses the instrument of public interest litigation (PIL). With the public interest litigation, any person can bring a petition about a problem before the court. ठीक है, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो पब्लिक को तो वो कोर्ट के सामने उनकी वो प्रॉब्लम रख सकते हैं PIL के थ्रू. And not just the person affected by the problem. PIL has often been used on behalf of people who are poor or disadvantaged. ठीक है, जो लोग गरीब हैं उनके बिहाफ पे यूज किया गया. ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज देखने मिला. एंड डू नॉट हैव द मींस ऑफ अप्रोच टू द कोर्ट. विद जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL, कोर्ट्स हैव गिवन जजमेंट ऑन पॉल्यूशन. कोर्ट ने पॉल्यूशन के ऊपर जजमेंट्स दिए, नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड्स पे जजमेंट्स दिए, एक्टिविशन ऑफ अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स, स्टॉपिंग चाइल्ड लेबरिंग एंड डेंजरस ऑक्यूपेशंस एंड अदर इश्यूज. इतने सारे अलग-अलग एरियाज पे जज ने जो कोर्ट है उन्होंने अपने अपने जजमेंट्स दिए. ये चाइल्ड लेबरिंग को स्टॉप करना, मतलब कम बिलो द एज ऑफ 18 कोई बच्चों को मतलब किसी भी जॉब पे न रखना, इस चीज को भी रोकने के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में. सो हियर आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर आल्सो. यस, सो वी हैव सीन द फंक्शंस, jurisdiction of Supreme Court, 3 types of jurisdictions. 21, chapter number 21, political parties and pressure groups. You might have already read the democracy is a government of a people, for the people and by the people. ठीक है, a democratic government is considered as a people's government. ठीक है, ये जो गवर्नमेंट होती है वो किससे होती है, पीपल्स गवर्नमेंट होती है, रन बाय पीपल देमसेल्व्स, जो खुद उसके सिटीजन ही चलाते हैं. इन प्रैक्टिस, in most of the countries, the democratic governments are run by the representatives elected by the people. You might be thinking how the people get themselves represented in the government. You people elect the representative through the process of election. ठीक है, people क्या करते हैं, elect करते हैं उनके representatives को to a process of election, through the process of election. Election के process से हम लोग किसी एक person को select करते हैं जो हमें represent करेगा. In election, candidates generally are nominated by organization known as political parties. तो ये candidates जो होते हैं ये nominated होते हैं, ठीक है, by the organizations known as, कुछ organizations से जो जिसे हम लोग political parties कहते हैं. Yes, some of these candidates contest elections as independent also. However, participation of the people does not begin and end with election only. इनका participation खत्म नहीं हो जाता सिर्फ elections तक. People also participate in the process of governance through group known as pressure groups. ये pressure groups के through ये government में जुड़ते हैं, और interest groups. In this lesson, we shall discuss political parties and pressure groups, especially in the context of our country. You will like to know more about political parties and pressure groups. Let's see what does it means. Political parties meaning and characteristics. Why do we need political parties? This is the question. In the present day democratic countries, political parties are considered as an initial component. ये क्या है? Initial component है for the formation and working of government. क्योंकि गवर्नमेंट को चलाना, इसके लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई पर्सन्स तो चाहिए होते हैं. ठीक है. Of course, in some countries like Libya, Oman, Qatar and United Arab Emirates, there are governments without parties.
These countries are not democratic and political parties are banned there. यहाँ पे क्या है इन कंट्रीज में are not democratic, ये डेमोक्रेटिक नहीं है और इसमें क्या है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बैन है. We can therefore infer that democracies functions successfully in the countries which have competitive parties systems. Political parties actually help the institutions and process of the government democratic. They enable people to participate in the election and other processes of the governance, educate them and facilitate them to make policies choices. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? They enable people to participate करने के लिए प्रेरित करते हैं इलेक्शंस में and other processes of governance. उनको educate किया जाता है, उस चीज का knowledge दिया जाता है, educate them and facilitate them to make policies and choices. If political parties are necessary to make the working of the representative government possible, you will ask as what is the meaning of political party. ठीक है, हम लोग के लिए एक क्वेश्चन बन रहा है, what is a political party? What are its main characteristics? What are their roles in the democratic government? Let's see the meaning of political party. A political party is generally described as an organized body of a people who share common principles and traces certain common goals regarding the political system. Political system से related जो common principles share करते हैं, ठीक है, certain common goals regarding the political system described. ये एक क्या है, political party क्या है, उन्होंने बताया है as an organized body. ये एक proper organized body है, ठीक है, of people जो common principles, जो common goals रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम वो लोग शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसे प्रोविजन बनाकर उसको पब्लिक के सामने रखते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट्स एंड सीक्स पॉलिटिकल पावर्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस टू ट्रांसलेट इट पॉलिसीज इनटू प्रैक्टिस. इट इज अ बॉडी ऑफ लाइक minded people having similar views on the matters of public concern. Gilchrist defines a political party as an organized group of citizens who possess or share the same political views and who by acting as a political unit try to control the government. ठीक है, ये इसकी definition दी हुई है गिलक्रिस्ट ने. Another definition given by Gittel is a political party consists of a group of citizens. A political party, ठीक है, group of citizens more or less organized who act as a political unit and who by the use of their voting powers aim to control the government. वो क्या करते हैं? aim करते हैं control to government, किसे? voting powers से उनके and carry out their general policies, और उनके general policies को बाहर लाते हैं. From this definition, it is clear that political parties are organized bodies. इससे हमें क्या पता चला? Political parties क्या है? Organized bodies है and are primarily concerned with the acquisition and retention of powers. Let's see the characteristics from the above mentioned definition of political parties. Main characteristics देखते हैं directly. A political party is an organized group of people. Political party क्या है? Organized group of people है. Organized group of people believes in common principles and common goals. जिसके common principles हो और common goals हो, ऐसा group of people. ठीक है, उसके बाद है its objective involves around seeking political powers through collective efforts. It employs constitutional and peaceful methods is seeking control over the government through the election. Control over the government through the election. Employs constitutional and peaceful methods use करेंगे. While in a power, it translates its declared objectives into governmental policies. ठीक है, इतनी सारी इनके characteristics होते हैं. Let's move directly to 21.2 political parties, functions and role. You have already read about the political parties as initial for the proper functioning of representative democracy. They perform vital functions in every political system. It is important to know
who places candidates before the electorate when there are elections in the country. Do you know who carries out campaigns during elections? Have you ever realized how a government is formed and who is nominated as the Prime Minister or Chief Minister? All this relate to the function of political parties and their role in a democratic polity. The functions performed by the political parties, especially in the context of India, are as under. Let's see. मतलब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन खड़े हुए, जैसे कि इन्होंने बताया. क्या अभी हमने कभी सोचा है? Do you know who carries the campaign during election? कौन ये campaigns election के टाइम करता है? Like we used to see in our areas कि जब भी election होता है, group of people came to us, ठीक है, group of people हमारे societies में आ रहे होते हैं, हमें उनके बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, वोट के लिए अपील कर रहे होते हैं कि to vote to them, ठीक है. ये सारे जो कैंपेन्स है ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये कौन करता है? हैव यू एवर रियलाइज्ड हाउ अ गवर्नमेंट इज फॉर्म? ये गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, ठीक है. हु इज नॉमिनेटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर? कौन प्राइम मिनिस्टर की तरह नॉमिनेट हुआ है? कौन चीफ मिनिस्टर की तरह नॉमिनेट हुआ है? ये सारी चीजें, राइट. बट अभी ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल हो चुकी है, ठीक है. जैसे हमें ये सारी चीजें पता चल रही. पहले के टाइम इतना बच्चों को पता नहीं हुआ करता था, बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ बिग एडवर्टाइजमेंट हमें ये चीजें बहुत इजीली पता चल रही है, राइट. लेट्स सी functions performed by the political parties. First one, they nominate candidates during election. They campaign to obtain support for their candidates in the election. वो campaign करते हैं to obtain support for their candidates in the election. Nominate candidates during the election. Nominate करते हैं candidate को. They play objective and programs before the voters through their manifestos. उनके प्रोग्राम्स प्रेजेंट करते हैं, उनके आइडिया शेयर करते हैं. प्रोग्राम्स इन द सेंस से कि वो लोग अपने आइडिया शेयर करते हैं कि अगर वो ये इलेक्शन जो है वो जीतते हैं तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, वो हमारी सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, ठीक है. उनके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सामने रखते हैं. Those securing the majority in the election form the government and intact and implement the policies, ठीक है. गवर्नमेंट एंड इंटेंट द इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज. जो भी मतलब वो इलेक्शन को जीतेगा, राइट, जो भी ज्यादा मेजोरिटी में जिसको इलेक्शन सिक्योर करेगा, ठीक है, वही वहां का मतलब गवर्नमेंट को चलाएगा और क्या करेगा, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी करेगा. दोस नॉट इन द पावर फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड कीप अ कांस्टेंट चेक ऑन द गवर्नमेंट. जो उसके अगेंस्ट मतलब नेगेटिव साइड जा रहे होते हैं वो हमेशा कीप अ कांस्टेंट चेक on the government. फिर गवर्नमेंट पे वो ध्यान रखा करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. The form opposition when they are in the minority in the legislature and constantly put pressure on the government for the proper governance. वो continuous basis पे क्या करेंगे, constantly put pressure रखेंगे गवर्नमेंट पे for the proper governance, कि वो properly गवर्नमेंट को चलाए, properly हर एक चीज को, हर एक फंक्शन को properly चलाते रहे, अपने सारे जो पॉलिसीज है उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते रहे. They educate people and help in formulating and shaping public opinion. वो लोगों को भी एजुकेट करते हैं, क्या करते हैं, educate people and help of formulating and shaping public opinions. Public opinions को shape करते हैं, मतलब उनको गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं. They articulate people's demands and convey them to government and they avoid the linkage between people and governmental institution. ठीक है, वो क्या करते हैं, they provide a linkage link बनता है between people and government institutions. Articulate people's demands and convey them to the government. In India, political parties have been performing the above mentioned functions quite effectively since independence. They have made representative governments in India both possible and successful for over past 6 decades. 6 decades से ये चलता आ रहा है, ठीक है. अपने पॉलिसीज को सामने रख रहे हैं, अपने खुद को बाहर अपने प्रेजेंट कर रहे हैं, वो वोट्स इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वोट्स ले रहे हैं, जीत रहे हैं, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ये सारी प्रोसेस इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस ये सारी चीजें चल रहा है. They provide effective links between citizens and governments on the one hand and electorate their representatives on the other hand.
They try to cater to people's demand on public matters and mobilize political participation. Elections without parties would have almost been impossible. Without parties, election possible नहीं हो पाता है. In fact, democracy needs strong and sustainable political parties with the capacity to represent citizen and provide policies, choices and demonstrate their ability to govern for the public good. The exercise of the experience of functioning of political parties in India during the last 6 decades indicate that by and large they have been instrumental in shaping public opinion. Public opinion को shape करने में मतलब उनको अच्छी तरीके से गाइड करने में ये सक्सेसफुल रहे हैं. क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड इम्पार्टिंग पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल. ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आए, इसलिए वो बहुत सारे अलग अलग कैंपेन भी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं. इम्पार्टिंग पॉलिटिकल एजुकेशन भी लोगों को दिया जा रहा है. दे सक्सेसफुली फॉर्म द गवर्नमेंट्स वेयर दे रिसीव द मैंडेट ऑफ पीपल and implement their respective policies and program both at the center and in the state. They have contributed towards making the institutions and processes of government truly democratic. We can therefore say that democracy in India has been strengthened by the competitive and multi-party system. The democracy in India have been strengthened and competitive and multi-party system. ठीक है, लोगों को वो लोग मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग कैंपेन कर कर लोगों को इसके बारे में समझाते हैं. क्यों इलेक्शन में सपोर्ट करना, मतलब क्यों वोट करना जरूरी है, क्या इसके पॉजिटिव साइड्स होते हैं. इस तरीके से वो लोगों को इस चीज का इंपॉर्टेंस बताकर, ठीक है, इसको वो शेप दे रहे हैं और इसी तरीके से वो लोग वोट इलेक्ट करते होते हैं और वो अपना शासन जो है वो कंटिन्यू करते हैं. मतलब वो अपने पॉलिसीज, अपने आइडियाज से इंप्लीमेंट करते हैं, इकोनॉमी को ऊपर लाने का ट्राई करते रहते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन. पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शंस एंड रूल.